हाँ ठीक है, प्री और मेंस का सर डिवाइड करके। Between these two periods, you have to be completely prepared for your mains exam. ठीक है, तो I'll write mains here. Mains prep, GS plus optional. ठीक है, मई से you start, जून, जुलाई, अगस्त. सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में you should be in a position to give 3 hour tests. So May, June, July, August, September, 5 months you have to do the basic subjects, economics, geography, सब हो जाना चाहिए, ठीक है, along with optional, ठीक है, कुछ चीजें बच जाएंगी, you can cover them in this period, and when you're done with that, give the test on that, ठीक है, I'll write here. When you are preparing this period also, this is also going to be the time when you will make that one pager notes. ठीक है, मेंस का एक syllabus point you will be covering here. इसके साथ साथ parallelly, for example, you are studying Lakshmikant, like the basic books, ये सब also you will cover side by side. ठीक है, तो broadly speaking, when you are in December, you will have been done with all the standard books. एक दो बार revision हो जाएगा आपका. आप अपना optional mostly cover कर चुके होंगे. ठीक है, आपने एक दो टेस्ट जीएस के दिए होंगे, 3 आवर टेस्ट, ऑप्शनल के आप 4-5 दे चुके होंगे ऑलरेडी टेस्ट, ठीक है, ये हुआ होगा. आप कम से कम 6-7 महीने रोज आंसर लिख रहे हो डेली. इट जस्ट टेक्स 1 आवर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. 1 घंटा बस सोने से पहले जस्ट राइट आंसर्स, गेट इट इवैल्यूएटेड बाय फ्रेंड, आई टू डू इट. हां, तो वो कर लेना आप. 4-5 क्वेश्चन लिख लेना, लेकिन गेट इट इवैल्यूएटेड एंड प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग स्किल. तो बाय दिसंबर व्हाट विल बी द सिचुएशन इज कि आपके पास मेंस का सारा माल रेडी होगा, ठीक है, नोट्स. You will be confident that you can write the 3 hour test. ठीक है. From Jan onwards till May, you will be focusing on your prelims preparation. इसमें the beautiful thing is that the books that you have read here, you will be reading these books again here. So you will be so well versed with the subject material ना कि भाई you will be totally Lakshmikant, you know in and out, spectrum in and out, you know all these things very well. So don't worry about कि मैं भूल जा रहा हूँ, रिवीजन नहीं हो पा रहा. ये सब रिवाइज करना इस टाइम में. ये रिवीजन पीरियड ही चल रहा है जो आपने यहाँ पे किया है, ठीक है. उल्टा आपका काम कम होगा. You don't have to do GS4, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सोसाइटी नहीं पढ़ना, तो काफी काम कम होगा. ऑप्शन को भी आप can give a rest in this period. So you are revising what you have already done. मतलब GS का preparation और भी strong हो रहा है इसमें. Along with this, you will give tests for prelims. Jan, Feb, March, okay. April onwards, you will start revising the keys of the test that you are given. You have one month बीच में होगा उनके. Revise the keys of the prelims का test that you have given. That is very important. See the mistakes that you are making. Also, when you are giving these tests, be sure to see what kind of trend is going on in your paper solving. For example, some people do 80 questions but with very poor accuracy and are not able to cross the prelims cutoff. When you give a lot of tests, you will know your own sweet spot. Ki, like for example, I know for a fact that between 85 to 87 questions is my sweet spot. I get the highest accuracy at that time. If I attempt more, I will go to negative marking. So you have to be aware of what you are doing. So maintain a book where you are writing कितने question attempt किए. Also, if you want to go into detail, something that I did in the second attempt is that कौन से क्वेश्चन जिसमें मैंने एडुकेटेड गेस मारा है, कंप्लीटली एडुकेटेड गेस, फैक्चुअल थोड़ा नॉलेज था और ब्लाइंड गेसिंग. यू कैन मेक 3 कॉलम्स. सी व्हेन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एडुकेटेड गेसेस, मेरे ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं. व्हेन आई एम डूइंग विद पार्शियल नॉलेज, आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव स्कोर. बट दैट वे वी बी एबल टू एनालाइज हाउ टू गो अबाउट द पेपर. आल्सो इसके बीच में फॉर पीपल हु आर वीक इन सीसैट, प्लीज एंश्योर दैट यू डू एटलीस्ट before closing the day, like you did daily writing for 1 hour, at least 1 to 2 hours you're giving for CSAT at the end of the day. So what I'm saying is basically this is a prelims is a confidence game. It's a mindset game. Once you have been doing CSAT from Jan to May, when you go for the CSAT paper, you will not have that kind of fear because you will have been given tests here. You will get good scores. You will see improvement. You will be in a very comfortable